अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मीट द पास्ट। पाकिस्तान के मौजूदा हालात से आप सब वाकिफ़ हैं बहुत अच्छी तरह से, और बहुत से लोग परेशान भी हैं। लेकिन सवाल ये बनता है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। इन सवालात के जवाब हमें मिलते हैं हिस्ट्री के अंदर, जो कि हम कोशिश करते हैं कि आप तक दो डिफरेंट नैरेटिव्स के थ्रू इस पॉडकास्ट के ज़रिए पहुँचाएँ। मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह the one and only Sir Hamza Abbasi. Assalamu alaikum. Walaikum assalam and very happy birthday. Thank you so much, sir. And the interesting thing is that we are going to talk about two figures born on the same day. We are going to talk to one of them and we are going to talk about the other one. Liaquat Ali Khan and Aniq Hashmi are born on the same date, and that is October 1st. That is today. Okay. Let's proceed. Thank you so much, sir. मज़ा आ रहा है बर्थडे के दिन पॉडकास्ट कर रहे हैं, और लियाकत अली खान के ऊपर ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आज। सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट लियाकत अली खान। व्हाट इज़ योर ओवरऑल परसेप्शन के हाउ सक्सेसफुल वाज लियाकत अली खान एज प्राइम मिनिस्टर? I think he was. Because when you talk about Liaquat Ali Khan, you have to understand that Liaquat Ali Khan was operating with one of the most powerful personalities in the history of the subcontinent, Muhammad Ali Jinnah. So, ये किसी हद तक obvious था कि as long as Jinnah lives, Liaquat Ali Khan will not be able to blossom the way he should have. Obviously, Jinnah's personality was so overshadowing that Liaquat Ali Khan did not get the chance to work to his maximum. However, Jinnah के इंतकाल के बाद we can see that Liaquat Ali Khan contributed, I think, the most to the development of Pakistan if we compare him with any other prime minister or any other premier of Pakistan. So today we'll discuss about the achievements and the things that he probably was unable to achieve. कुछ चीज़ें जो वो नहीं अचीव कर पाए, आज उस पर बात करेंगे, and we are also going to see उनकी वजूहात क्या थी। Absolutely, sir. So मेरा ख्याल है सबसे पहले सबसे अहम चीज़ को डिस्कस किया जाए, that is going to be the Constitution of Pakistan. I believe कि लियाकत अली खान ने, and probably he's the only one who actually attempted to create that constitution. जो आपकी शिकायत थी जिन्ना से कि वो constitution नहीं बना सके, लियाकत अली खान on the other hand made basic principles committee, a 25-member team of lawmakers and people who knew about constitution making and all. There were very few educated, I'm sorry to say. So Liaquat Ali Khan made basic principles committee, which gave his first report, which was called Objective Resolution. Now, Objective Resolution was the first draft constitution which was made to be the future constitution of Pakistan. Actually, Objective Resolution अगर आप इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो करारदाद मकासद, और इसकी जो बेसिक थीम थी वो ये थी कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन किस फ्रेमवर्क पे बनेगा, क्या पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक डिज़ाइन होगा, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को जिन बुनियादों पे बनाया जाएगा उन बुनियादों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसी हाल में सिर्फ माइनॉरिटीज़ को राइट्स देने की बात नहीं थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द बेसिक फ्रेमवर्क, क्योंकि कुछ लोगों में मिसकॉन्सेप्शन है, तो मैंने कहा इसको आज आपके प्रोग्राम और पॉडकास्ट के तवज्जुह से ऑन दिस प्लेटफॉर्म विच इज़ प्रिटी सक्सेसफुल एंड वेरी पॉपुलर अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसको क्लियर कर दूँ कि इट वाज नॉट अबाउट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, इट वाज अबाउट द बेसिक फ्रेमवर्क ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज टू बी मेड। आई एग्री कि ये सक्सेस है, लेकिन क्या लियाकत अली खान जैसी पर्सनैलिटी के लिए इतना काफ़ी था? सर, मैं इसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप किसका इशारों किनारों में जिक्र कर गए। भारत, हमें अपनी कंटेंट के ऊपर फोकस करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो सही कंटेंट जो कि हमारे स्टूडेंट्स तक नहीं पहुँच पा रहा ड्यू टू प्रॉब्ली लैक ऑफ नॉलेज, वो हम पहुँचाएँ। सर, लियाकत अली खान का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, आई थिंक कि इट वाज अ फ्रेमवर्क एंड इट हैड ओनली 6 बेसिक पॉइंट्स, सो दैट वाज अ गुड अटेम्प्ट। लेकिन बात ये थी कि मेरा ख्याल है देयर वाज अ लॉट ऑफ कंसल्टेशन बिकॉज इट वाज रिजेक्टेड बाय ईस्ट पाकिस्तानीज हु बिलीव्ड कि उनको वेस्ट पाकिस्तान जो है वो ओवरशैडो कर देगा। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके। ठीक। नंबर 2 is about from ulamas. The ulamas made Pakistan
And since 1940 till 47, पाकिस्तान मूवमेंट के साथ एक नारा जुड़ा हुआ था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह. पाकिस्तान to many religious people, for many, it was made on for the to be the Islamic country, a completely Sharia compliant country. ठीक है. So वैसे ये खा भी रही है. सर मेरा ख्याल है कि इस्लाम वाज यूज्ड फॉर पॉलिटिकल गेन्स. ओके, देखिए आपने भी जो बात की, यू सेड देयर वर टू मेनी कंसल्टेशंस. तो पाकिस्तान की 55% पॉपुलेशन एक बात पे नाराज़ है. आप हो सकता है कि उनके जो ग्रीवियंसेस हैं वो इतने वैलिड ना हों, लेकिन उनको आपको कंसल्ट तो करना पड़ेगा. और जहाँ तक बात है उलमा की, जो लाजियाँ थे कि मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा, जिसमें अहले सुन्नत, अहले तशय्युअ और डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के उलमा शामिल थे, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में एक मेजर रोल प्ले किया. हालांकि मेजर रोल बैरसूरत मुस्लिम लीग का था, जो आलिमों की जमात नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद आपको उनको कंसल्ट करना पड़ेगा. लेकिन आपका ये पॉइंट के कंसल्टेशंस थी और बहुत ज़्यादा रुकावटें थी, उसके बावजूद लियाकत अली खान जैसे तजर्बे या एक पॉलिटिशियन, लियाकत अली खान जैसे एक लेगेसी वाले एक सरबराह मुमलिकत को कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए. सर, कमिंग बैक टू माय फर्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान यहाँ तक कैसे पहुँचा? Do you think when in 1947 the world was already divided into two poles? The USSR, mighty USSR, supported communism, whereas the US wanted democracy all across the world. There was what do you think was Pakistan's position here? Very tricky. There are factors in this. You're talking about democracy. Actually, America always wanted, the United States of America always wanted the stop of communism, the spread. Russia wanted to spread communism in all the areas where they thought was going to be beneficial for them. लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने हमेशा ये कहा कि we want to stop the spread of communism. Now, where does Pakistan stand in this position? See, Pakistan is a country which is made in the name of Islam. And when we look at the Russian society and when we look at the communist style of governance, we find it very far away from Islam. So Pakistan cannot actually stand with a country which goes against the basic principles of economics which Islam teaches to the Muslims. Communism does not even come closer to what Islam's economic systems are. First. Secondly, Pakistan was born with an enemy. Pakistan did not have friendly neighbors around. Pakistan has hostile neighbors around. हम पहले भी बात कर चुके हैं. Pakistan needed weapon. Pakistan needed military equipment, which at that time Liaquat Ali Khan believed that America is a better supplier of the defense equipment and the weapons that Pakistan needed at that time. Apart from that, there's another important factor. If you look at the World War II, post-World War II scenarios, पैसा किसी के पास नहीं था. Pakistan was a new country. India पैसे नहीं दे रहा था पाकिस्तान के. Pakistan wanted to be in the camp of some economic superpower. And America was the best choice at that time. Sir, I would respectfully disagree with what you said. Because, point number one, sir, when USSR's premier visited Pakistan and invited Liaquat Ali Khan to visit USSR in it, right? Liaquat Ali Khan went to USA. That gave a very wrong impression to a mighty power like USSR who is residing just behind you. My point here is, okay, sir, Pakistan could have been a better ally of USSR as compared to US, because US previously, historically, अगर आप देखें तो हर दफ़ा US ने हमें डिच ही किया. ठीक है, ultimately लियाकत अली खान को USSR जाना पड़ा था, if I'm not wrong. I said, to a certain extent, I would have to agree, looking at what America did with Pakistan on the occasion when Pakistan needed the American support. Let it be U2, let it be 1965 or 71. Okay, this is one thing. This is a part of history that Pakistan becomes a US ally, and there was some impact on the government as well as on the life of Liaquat Ali Khan. Now, let's come back to the core question that you asked at the beginning, that why are we here? Why Pakistan stands here and why Pakistan is facing problems. I feel
one of the things that Liaquat Ali Khan anticipated and highlighted was the corruption in the civil services and the officers which were actually running the country. What do you think that Liaquat Ali Khan did to overcome this situation? Sir, at the moment when there was no constitution, Liaquat Ali Khan actually did something to stop corruption in the initial stage. However, he failed. Let me explain why. Because he introduced an independent law called PRODA, Public Representative Officer Disqualification Act. If any public servant from police or any other department, let it be any government clerk or any ministry, if he's found in malpractices, corruption, misuse of power, okay, and there are 3 evidences against him from the civilians, most probably. So if found guilty, he would be immediately taken off from his civil service. Don't you think this law was an easy thing to be misused against the honest officers by the corrupt officers to get rid of them from the entire system which was running on the basis of corruption? That is what happened actually, sir. All the what happened to PRODA was all the corrupt officers, okay, they placed false allegations on the honest ones and got them out of the office. So you mean to say that there was a chain which was being broken because of those honest officers. Absolutely. And with the use of PRODA, which was actually brought in to stop corruption, was used to overthrow and remove these officers from the system. And the corruption prevails. Okay. Moving on, sir. The next topic that we are going to discuss is about Rawalpindi conspiracy, and I believe that you might have a better understanding of this particular event. Okay. I disagree with you on this point because there's nothing that you don't have a understanding about. तो आप जो है वो क्या कहते हैं, ये बात करें तो हम इसको ज़रा देख लेते हैं कि 1951 April, in fact, there was a conspiracy against Liaquat Ali Khan to overthrow him. अब पॉइंट ये है कि इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल कौन कौन था. तो हमने अपने नाजरीन को ये बता के थोड़ा हैरान कर दिया कि इस कॉन्स्पिरेसी में पाकिस्तान के और उर्दू अदब के एक बहुत मशहूर और बहुत मारूफ और बहुत मोतबर शायर फैज़ अहमद फैज़ भी शामिल थे. Really? Yes. अगर आप फैज़ अहमद फैज़ का बैकग्राउंड उठा के देखिए तो फैज़ अहमद फैज़ को लेनिन लिटरेरी अवार्ड, जो कि यूएसएसआर का सबसे बड़ा अदबी अवार्ड है, वो मिल चुका है. तो आप ये कहना चाहते हैं कि रावलपिंडी कॉन्स्पिरेसी में कुछ कम्युनिज्म कैरेक्टर? एग्जैक्टली. और आपकी नॉलेज के लिए और जितने हमारे सामीन हैं उनकी नॉलेज के लिए कि देयर यूज्ड टू बी अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान which was active behind it. Sir, what was actually the event? The event was to overthrow Liaquat Ali Khan from power, replace him with some government officials from different institutions, and remove Liaquat Ali Khan or probably even eliminate him. Although the Rawalpindi conspiracy in 1951 April did not get the results what it was aimed for, but I feel that Rawalpindi conspiracy 2.0 on 16th October 1951 was successful, which resulted in the assassination of Liaquat Ali Khan. But before we talk about the assassination of Liaquat Ali Khan, which was probably the second biggest setback to the newly established state of Pakistan, let's talk about some of his achievements as the Premier or the Prime Minister of Pakistan. Sir, I would like to highlight here that Liaquat Ali Khan has, if not equal, then mutual contribution in the establishment of state bank of Pakistan, which is primary need. Don't you think it was inaugurated by Jinnah? It was, but he was also there and he was the Prime Minister, so we need to give him some contribution. So, secondly, National Bank of Pakistan, okay, was established ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरीज जो है वो डिस्पर्स होना शुरू हो. फिर उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज रीसेटलमेंट ऑफ मुहाजिरीन done by started by Liaquat Ali Khan and it finished at the time of Ayub Khan probably. Lekin it was to some extent because the refugee crisis was one of the biggest crises that Pakistan faced. And Liaquat Ali Khan had this primary concern about this refugee issue, because of which he went for the Liaquat Nehru Pact later. He also set up Karachi seaport. Probably it was set up earlier by the British, but
उसमें एडवांसमेंट्स करी. Kimari port was already there, but obviously with the growing business that Pakistan would get and the developments that were required, it was obvious that there was something to be done by the governments of Pakistan. अंग्रेजों ने जो कर दिया था वो कर दिया था, लेकिन लियाकत अली खान had to do something. You just spoke about something like Liaquat Nehru Pact. Now, what is the Liaquat Nehru Pact? Or like what was the reason why Liaquat Ali Khan was thinking about going to Pandit Jawaharlal Nehru and talking to him and drafting a pact? Because हम तो ये देख रहे होते हैं कि 1948 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई है, लियाकत नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल फेस करने पड़ रहे हैं. हमने पिछली पॉडकास्ट में जिक्र किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के कुछ ज़ाती मामला ऐसे थे जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ी. तो लियाकत अली खान ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बात करके लियाकत नेहरू साइन किया. क्यों सर? यहाँ पे मेरी अंडरस्टैंडिंग फिर रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर है कि लियाकत नेहरू पैक्ट जब 1950 तक लियाकत अली खान को ये बहुत अच्छी तरह से एहसास हो चुका था कि जिस इंटेंसिटी से रेफ्यूजीज ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान वो ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. जो ऑलरेडी आए हुए लोग हैं उनको सेटल करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी है. एंड दे वर लिविंग अ वेरी हार्श लाइफ ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्डर. सो लियाकत अली खान ये चाहते थे कि अब जो मुसलमान इंडिया में मौजूद हैं वो वहाँ पे सेफ रहें और इन रिटर्न जो हिंदूज़ यहाँ पे मौजूद हैं जिनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में, पाकिस्तान को प्रॉस्पर कराने में नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का एक बहुत कलीदी किरदार है, तो वो पाकिस्तान में सेफ रहें और दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे की सिटीजन्स को सिटीजनशिप प्रोवाइड करें ताकि जो माइग्रेशन है वो मज़ीद रुके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में. मेरा ख्याल है कि किसी भी एक डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए जो कि न्यूली बॉर्न, कॉन्स्टिट्यूशन जैसी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और जैसे आपकी शिकायत थी जिना से कि वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सके, लेकिन लियाकत अली खान ने अपनी पूरी कोशिश करी. मेरा ख्याल है उन्होंने बनाई. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी मेड बाय लियाकत अली खान हिमसेल्फ. ये पहला अटेम्प्ट था एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के जो कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करेगा. लियाकत अली खान ने बनाया. लेकिन सर एट दैट मोमेंट देयर वर 3 contradictions, conflicts over this conflict. One by East Pakistan because they believe कि West Pakistan शायद हमें overshadow कर जाएगा. Another by ulamas who stated that this constitution is not enough Islamic and we made Pakistan on the basis in the mixed religion. in the name of religion. The third was by feudal landlords. There were a lot of Waderas and Jagirdars who gave large spaces of land to Pakistan. And in return, what they believed कि भाई हम जब पाकिस्तान बनेगा तो हमें कोई अच्छी आला मिनिस्ट्रियाँ मिलेंगी और हमें बड़ी पावर्स मिलेंगी. और ये तीनों कम्युनिटीज़ बहुत जल्दबाजी में थे बिकॉज इट वाज जस्ट अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. हो सकता था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए बहुत कुछ होता, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया. और यहाँ पे पाकिस्तान पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाते बनाते रह गया, जहाँ इंडिया ने फ़ौरन अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल बाद डेवलप कर लिया और आज तक इस्टेब्लिश्ड है. पाकिस्तान को 9 साल लग गए. सर आपके ख्याल में लियाकत अली खान जैसे पॉलिटिकल बैकग्राउंड की शख्सियत, लियाकत अली खान जैसी लेगेसी वाले पॉलिटिकल एलिमेंट को सिर्फ कोशिश करनी चाहिए थी या पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर दे देना चाहिए था? क्योंकि जब आपने मुझसे कहा ना कि आपको जिन्ना से शिकायत थी, तो लियाकत अली खान से भी यही शिकायत रही कि लियाकत अली खान ने पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताया. हालांकि आपने यू जस्ट एक्सप्लेन द रीजंस व्हाई इट वाज डिफिकल्ट टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पाकिस्तान, बट the development of the objective resolution was the first and the most important step that he had taken. He all had to establish the building of the constitution on the foundation that was already laid. So I believe that Liaquat Ali Khan, for some reasons, was again unable to deliver like Jinnah in drafting the constitution. लेकिन यहाँ पर एक misconception है कि बेस जो आपका objective resolution है वो माइनॉरिटीज़ को रिलीजियस राइट्स देने के लिए बनाया गया था. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो दैट्स वाई वी बिलीव कि हमारे स्टूडेंट्स हैं वो हिस्टोरिकल इवेंट्स को पढ़ें ताकि वो इन मिसकंसेप्शंस का शिकार नहीं हो कि पाकिस्तान में जो चीज़ें हुई या पाकिस्तान में जो चीज़ें डेवलप की गई उनके पीछे रूट कॉज क्या था. तो फाइनली व्हेन वी सी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग, लियाकत अली खान अगेन फॉर मी was a failure
And because of this, not only he lost his life, but Pakistan could not be established as a democratic society where the power would rest with the people of Pakistan rather than some non-elected people who ran Pakistan in the next few years and made a lot of created a lot of problems for Pakistan. Let me develop on this. आपकी कहने के मुताबिक लियाकत अली खान की ख्वाहिश थी कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं, जो उनकी आबाई ज़मीनें हैं, आबाई इलाके हैं, वो वहाँ पर इतना सेफ रहें कि वो माइग्रेशन के बारे में ना सोचें और वो पाकिस्तान ना आए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक इन्फ्लक्स था रेफ्यूजीज़ का जिसको पाकिस्तान हैंडल करने में नाकाम हो रहा था. लेकिन अगर एक और चीज़ देखें आप इसमें, और आपने हिंदू कम्युनिटी या पाकिस्तान की नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपने उसका भी जिक्र किया. लेकिन एक एलिमेंट और है जो मुझे फील होता है कि बाय गिविंग सिक्योरिटीज एंड सेफ्टी टू द माइनॉरिटीज लिविंग इन पाकिस्तान, it was a very positive and a very important step towards establishing an image of Pakistan that we are the country made in the name of religion, and Islam protects the other religious minorities with their complete religious freedom and gives them no sense of alienism or alienated thing कि उनको ये मुल्क छोड़ के जाना पड़े. तो I think it was a wonderful move and it did reduce the pressure from Pakistan, and it also bounded India to respect their Muslim minority population that lived over there. So I think if we look at in the global aspect, if we look at the achievements of Liaquat Ali Khan, I think it was a wonderful thing that he did as a Prime Minister of Pakistan. Okay. Now, such an important person, इतनी अप्स एंड डाउन्स से गुजरने के बाद, जिन्ना की डेथ के बाद पाकिस्तान को संभालना, प्लस पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे एक से डेवलप कराना, पाकिस्तान में रेफ्यूजीज़ को सेटल कराना. लियाकताबाद जो इलाका आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में मौजूद है, वो पहले किसी और नाम से मशहूर था, फिर लियाकत अली खान ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो ज़मीन खरीद के रेफ्यूजीज़ की सेटलमेंट के लिए दी. और उसके बाद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने भी इसी किस्म का एक स्टेप लिया जिसकी वजह से नाज़ाबाद का इलाका वजूद में आया. तो इन तमाम चीज़ों के बाद लियाकत अली खान को दिन की रोशनी में इन द ब्रॉड डे लाइट गोली मार दी. क्यों? Sir, very shortly I would like to address this topic, please. The death of Liaquat Ali Khan. Now, आप यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेशनल पावर्स की कितना इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान के अंदर, के रावलपिंडी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर आप ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट बैकग्राउंड था उसका. इसी तरह से लियाकत अली खान फाइनली वेंट टू USSR, एंड व्हेन ही केम बैक देयर वर सर्टेन पीपल हु लेटर टुक टर्न्स वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड in the assassination of Liaquat Ali. First of all, they wanted to overthrow his government. Probably the plan was not about the assassination, but Liaquat Ali Khan found out. Obviously, Prime Ministers के पास इतनी intelligence report तो होती है, ठीक है? And there were some patriots working in favor of Pakistan, of course. There are always people who work for the state. Absolutely, sir. Good people were always there in all their parts. And these are the silent fighters for the country. They protect the country when you don't not even imagine. Absolutely. So, Liaquat Ali Khan found out about the conspiracy. Really? Yes. And in that speech, जो कि लियाकत बाग में उन्होंने करनी थी, उसके अंदर he was going to expose those people by taking their names. That is why that the death of Liaquat Ali Khan at that moment and in the broad daylight was very significant over here. Why? The speech which never started. Absolutely, sir. The speech was about to expose people, a lot of people, a lot of big names. And I all quote again, they also took turns later. So, in the government. So, what happened कि लियाकत अली खान साहब अपनी speech prepare करते हैं राना लियाकत अली खान के सामने. तो राना लियाकत अली खान was the only woman who know about what he's going to speak. Only person rather. Only person. Saad Akbar was an Afghan or Pashtun character. I don't know about his background, but probably he was from some civil servant. He was a civil servant of a lower rank. Saad Akbar was given 1,500 rupees to kill the Prime Minister of Pakistan. Yes. And sadly, he was sitting on a point blank range with a gun. Ali Khan, with a gun. And obviously, by breaching all the Prime Minister's security, he was actually placed there. When Liaquat Ali Khan started his speech,
Saad Akbar shot Liaquat Ali Khan, and at the same time, Saad Akbar was being sniped. So we come to a conclusion that फैसला on the spot. फैसला on the spot, लेकिन उसके अलावा एक एस्पेक्ट और है कि when the assassination is killed on the spot, that means that the conspiracy was hatched by somebody else. And with the death of the assassin on the spot, normally होता ये है कि the high profile case cannot be resolved. Sir, someone did try to resolve that. Rana Liaquat Ali Khan was sent to Romania as an ambassador of Pakistan, so she could not speak to the public or the press. Later, there was an investigation report, and those who were working on that report were on a plane with all the files and documents, and that plane. And don't tell me that the plane crashed. Yes. And the case was closed. So let's come to a concluding point that Liaquat Ali Khan, being the Prime Minister of Pakistan, was such an important personality from the Pakistan movement, the foreign minister in the interim government of the 1946 under the British. He becomes the Prime Minister. He works day in and day out for Pakistan. And only after 4 years, 2 months and 2 days to be precise, he is shot down. And that brings the derailing of Pakistan from the vision and the dream that Jinnah and Liaquat Ali Khan probably had together for this nation. So your concluding words would probably be more important than what I have said. So please. Not at all, sir. Thank you for the honor. Sir, I believe that Liaquat Ali Khan was one of the few genuine people who actually wanted Pakistan to prosper in the way that Jinnah had dreamed of. So he was killed because उनका जिंदा रहना बहुत सारे लोगों के लिए problems create कर सकता था. Sadly, just like any other prime minister who was killed in Pakistan, लियाकत अली खान का मर्डर भी एक मिस्ट्री रहा. और मज़ीद इस बात पे कुछ नहीं कहा जा सकता बिकॉज दीज वर द प्राइम कॉजेज़. और हमारे सवाल का यही जवाब है कि ये इवेंट्स जो पाकिस्तान के साथ शुरू से होते रहे, जो हालात पाकिस्तान के साथ शुरू से रहे, उसने ही पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुँचाया है. Thank you very much. See you inshallah in the next episode of Meet the Past. Thank you so much for your time, sir.